requirement is that the loop gain A beta, its magnitude should be unity 1. If I see this as a closed loop system, this is some active device. It may be, so this is what I see. This is some active device. It may be transistor, it may be op amp, anything. So it is maintaining its gain. So we want the gain should be at least 1. You can say the free flow of electrons and thereby generating different sources of noise due to different sources of noise. Some oscillations are generated, and due to positive feedback, it gives rise to that oscillation. So these oscillations grow. Then again, there is a feedback, and due to this cumulative effect, these oscillations go on increasing and increasing and increasing. Now there is a need to get the sustained oscillations. So in order to that, we need to hold good its Barkhausen criteria. That is, the loop gain should be unity and its phase shift should be 0 or 360 degree. So this is what is a requirement for any oscillator. So let us start with some RC oscillator. Now, what is the requirement for this RC oscillator? There are different RC oscillator we are going to study. First RC phase shift oscillator, then Windbridge oscillator, then quadrature oscillator. So we'll see, let us say one by one we'll see. Okay. So in this RC oscillator, if we see, ultimately we want that if at all we are trying to get some amplifier, one is needed, some amplifier, and then some network for the maintaining the phase shift. These amplifier, if we use in inverting mode, it may give us a 180 degree phase shift. Then due to amplification, we can adjust the gain so as its loop gain should be nearly, or we can say a little bit larger than 1. Now to get the 360 degree phase shift, mostly this amplifier in the inverting mode may contribute 180 degree, and then 180 degree due to this feedback will try. So this, in this way, this is a generalized thing we can say. Now how to get that one? That depends on different circuitry. Okay. So at least it is, we are confirmed with that we will try to maintain the gain with the amplifier and with the feedback, the 360 degree phase. Now what do we observe? If I just see the RC network, if I see this RC network, we know if there is a resistor is that passive device whereby voltage and current are in phase, so they do not change. But once there is a capacitor, and if there is a pure capacitor and pure resistor, we know there is a phase shift of 90 degrees. There is a, you have studied the lag and lead between the voltage and current. When there is a resistor and capacitor, there may be a lag, and if there is a resistor and inductor, there may be a lead. So what do we observe? There is a 90 degree phase shift. अगर phasor diagram में बनाए तो suppose ये voltage है तो ये current रहेगा उसका, and there will be pure रहेगा तो 90 degree phase shift. But we know due to dielectric losses, capacitor cannot be pure. Similarly, in resistor also it cannot be pure, but there are certain elements which may not give the 90 degree phase shift. अगर ये exact 90 degree होता तो मैं क्या करता? दो RC network use करता, 90 plus 90, I could get 180 degree phase shift, and the another 180 degree phase shift using inverting amplifier. But this is not the case. There is a little bit less than 90. So we can adjust the value of RC in such a way that one RC will contribute to 60 degree. I think you have studied this RC phase shift oscillator earlier also. I hope so. So we'll use such 3 RC network. Here you can see. So each will contribute 60 degree, 60 degree, 60 degree, thereby 60 into 3, 180. So this is the fundamental behind this one. Now we'll see the actual circuit of RC phase shift oscillator. So this is the concept behind this one, you can see. You have already studied RC phase shift, I suppose, I don't know, using transistor. Very same thing we'll use in the using op amp. Okay, very same. So this is the RC phase shift oscillator using op amp. Now what are your observation? What do you see? There are 3 RC networks. So each will contribute 60 degree. So total 180 degree phase shift due to this. Okay, and this feedback is in the negative feedback. This feedback is in the negative one. So you can, or this is given in the inverting one. So 180 degree phase shift will be due to operational amplifier.
So thereby we are able to get 180 plus 180 into 360 degrees. So one criteria is fulfilled. Now need to adjust the gain. Why do we need to adjust the gain? We know if there are certain oscillations are growing, it may die out if it under damped oscillation, or it may go over damped and it will go unstable. The system will become unstable. So in order to get the sustained oscillations, we need to adjust its loop gain A beta nearly equal to 1. And that is possible due to adjusting the gain in such a way that A beta equals to 1. That is the job of this one. Now, when this A beta equals to 1, our frequency of oscillation will become equal to the resonance frequency of this circuit. And that frequency is given by simply like this. Actually, in general, I said any frequency of oscillation is given by 1 upon 2 pi RC. Now, depending on the values of different RC, such some combination changes. Here, all the R1, R2, R3 equal to R. All resistors are same. Similarly, C1, C2, C3 equal to C. All resistor and capacitors are equal. Thereby, it gives me a formula for the oscillation. Now here, what is N? Number of RC network. How many RC network are there? 3. So this formula simply will become 2 pi RC into 2 into 3, 6. So you can calculate the frequency of oscillation, audio frequency range oscillations by adjusting the value of RC. Now, in order to get our condition, other condition, A beta equals to 1, we need to get, there is a calculation actually, that derivation is not there in your course. So simply I can tell you here, we need to maintain its forward gain equals to 29. Just you remember that. For getting A equals to 129 means beta equals to 1 by 29. From this you can calculate the value of resistors जो यहाँ दिए हुए ये सब combination. Okay, so in this way you can get the sustained oscillations. So anything left? How what we have seen in general? Yes. सर वो फेज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा सर आरसी नेटवर्क से एक बार एक्सप्लेन कर दो. यस यस यस. कोई भी चीज में जब आपने पहले पढ़ा था, याद है, मैं आपसे जनरलाइज करता हूँ, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर पढ़ा होगा, ये इस तरीके से पढ़ा था आपने, इससे ऑसिलेशन जनरेट करते हैं. इसमें एक थोड़ी देर के लिए हम एक वोल्टेज लगाते हैं बैटरी, जस्ट थोड़ी देर के लिए इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और फिर इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं. अब ये चार्ज कैपेसिटर है तो ये यहाँ से डिस्चार्ज होगा. सो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज बट नाउ मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप in such a way that at certain time the capacitor will be fully discharged but the magnetic field will be maximum, and after a while ये maximum हो गया है तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे it will try to go in the same direction. The capacitor voltage will now again charge like this one, so magnetic field फिर कम होगा. अब इसमें क्या होता है, एक समय के बाद there is a reversal of phenomena, so we get a negative charge. इस टाइप के ऑसिलेशंस पढ़े ना, अब मैं इसको जानबूझ के रिपीट नहीं करना चाहता बिकॉज दैट इज देयर इन द वेरी फंडामेंटल. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस वन, दिस थिंग, इट इज कॉन्सेप्चुअल बिकॉज एल और सी में देयर आर लॉसेस. सो ये ऑसिलेशंस क्या होगा, ये ऐसे बनेंगे और धीरे 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 इसके अंदर का जो रेजिस्टिव लॉस है उसके कारण ये डाई आउट. सो व्हाट इज नीडेड हियर, यू नीड हियर ए एम्पलीफायर इन ऑर्डर एम्पलीफाई दिस वन. ये गेन जो है इसका बढ़ा के इसको एम्पलीफाई करना है सो दैट विद द सस्टेन ऑसिलेशन या ए बीटा अगर हमने 1 मेंटेन किया और फेज शिफ्ट 360 डिग्री किया तो हमको सस्टेन ऑसिलेशन मिलेगा. अब आरसी नेटवर्क में सिंपल फेनोमेना है कि सम कंपोनेंट शुड बी फॉर एम्पलीफिकेशन. दैट कैन बी ट्रांजिस्टर, दैट कैन बी ऑप एम्प. So already transistor is circuit you have studied and we need to maintain. अब हमको मालूम है कॉमन इमीटर में भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट आता है. सिमिलरली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट आता है. दैट इज ऑल. नाउ अनदर 180 डिग्री फेज शिफ्ट वी नीड टू मेंटेन बाय दिस सर्किटरी फीडबैक. सो व्हाट डू वी डू, वी नो between R and C, if it is pure, we can get a 90 degree of phase shift. But generally in practice, there is no pure capacitor as such any phenomenon. At least there will be some dielectric losses. And due to that, this exactly will be not 90 degree, but there will be some lag lead, you can say less than 90. So why not to have the values of C and R in such a way that will adjust its phase shift as 0. Will adjust its phase shift as 0. How that is adjusted, that you know already you have studied. But let me tell you, if you want, this you can very well understand. This is reactive capacitance. Reactive capacitance is given by how omega C. Omega is equal to 2 pi, 1 upon omega C. Omega is what? 1 upon 2 pi F. So 1 upon 2 pi F. And there is a resistor. So what is impedance? Impedance is nothing but a combination of resistance and reactance. Okay. Now there will be a phase shift. What is that phase shift? Tan inverse of
xc by r. Now just by adjusting the value of c, I can adjust the value of xc by r in such a way whatever is required to me. So I will adjust it to 60-degree phase shift. Now one RC combination is giving 60-degree, then 3 combination will give 180-degree, and now it is given to inverting terminal. So whatever the fraction of output voltage is we are giving it to the inverting end, and thereby we are getting total phase shift of 180 plus 180 as a 360-degree phase shift. Now, in order to get the sustained oscillation, we need to maintain A beta equal to 1. To get that one, if we do a calculation, we need to adjust its value forward gain as equal to 29. And to maintain beta equals to 1, it will be reciprocal of A. Now, the frequency of oscillations occur at a resonant frequency, and that resonance frequency is given by this formula, where the n represent, or you can say this becomes our formula, that 1 upon 2 pi root 6 RC. This formula you should remember, क्योंकि हम लोग अब नंबर ऑफ स्टेजेस कम ज्यादा करते नहीं, 3 ही रखते। हम लोग जो पढ़ने वाले, ये जनरलाइज है, आप 4 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी यूज कर सकते हैं, 6 भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से। बट अभी तक हम जो भी थियरी में पढ़ते हैं उसमें 3 ही स्टेज का पढ़ते हैं, तो बेटर वे यही फार्मूला याद रखना, ठीक है। अगर कभी कैलकुलेशन आ गया या कुछ आ गया, 1 upon 2 root 6 ये बोल सकते हैं pi RC. So this is what is a RC phase shift oscillator. Okay, now second, Wien-Bridge oscillator. So now we'll see the Wien-Bridge oscillator. Now for Wien-Bridge oscillator you have already studied. Can anybody tell me what you have studied in that one? रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। रजिस्टर और कैपेसिटर का क्या रहता है, थोड़ा सा तो याद करो। ये मैं डायग्राम बनाऊंगा तो शायद आपके हाँ ब्रिज बनता है, ब्रिज बनता है। एक तो ये बात बोल दिए, इसमें एक रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज में रहता है, सीरीज में और एक पैरेलल में होता है। बस यही चीज है, इतना भी याद रख लिए ना तुमने, एटलीस्ट विन ब्रिज समझ यार रहता है उसमें। ये ग्राउंड कर दिया मैंने, एक आरसी मैंने यहाँ दिखा दिया सीरीज, एक आरसी यहाँ पे पैरेलल में। और एक याद रखना, भूलना नहीं, इसका जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है ये नॉन इन्वर्टिंग को है, मतलब पॉजिटिव फेज शिफ्ट इसने मेंटेन, और गेन जो है ये आरएफ एडजस्ट करेगा, ठीक है। गेन हम एम्प्लीफिकेशन वाला भी काम कर रहे हैं और पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहे हैं। इसी को मैं अगर थोड़ा इस तरीके से बनाऊं तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस, पैरेलल में है और एक सीरीज, और बाद में क्या है, जस्ट एक रजिस्टर यहाँ पे, और यहाँ मैंने थोड़ा सा वेरिएबल रजिस्टर यहाँ दिखा दिया कि ये आरएफ है मेरा, ये R1, इसको ग्राउंड कर दिया, और ये मेरा आउटपुट है। अब ये ब्रिज को इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज का जो वेरिएशन है, डिफरेंशियल जो भी वेरिएशन है, इसको मुझे एम्पलीफायर को देना है। यहाँ मैं यहाँ ऑप एम्प लगा ताकि ये जो जंक्शन है, ये मैंने बता दिया पॉजिटिव को जाता है, ये याद रखना है, और जो इधर का नेगेटिव को जाता है, ये इससे याद रहेगा आपको कि ये जो दोनों का जंक्शन है वो नॉन इन्वर्टिंग को जाना। So this is totally equivalent. Both diagrams are same. So we can say this is a feedback network. यहाँ output मिल रहा है, and this is just a gain adjustment. And up to this you can say amplifier. And here you can say a feedback voltage is given. Here it is. Now अब हमको क्या क्या maintain करना है? We need to maintain phase angle criteria या phase shift criteria. That is phase shift should be 0 degree. Now this condition, how do we occur? This condition occurs when the bridge is balanced. And how, when the bridge will be balanced, that is at resonance, when there will be a resonance, and when the bridge is balanced, the oscillations which it generates, that is nothing but a frequency of oscillation, and that is in what we are interested. So the frequency of oscillation FO is exactly the resonant frequency of the balanced Wien bridge, and is given by, how it is given by, simple अपना formula 1 upon 2 pi RC, where we are maintaining the resistors are equal. So one condition we got, if you have been asked to design the Wien bridge oscillator for certain 1 kilohertz या 1.5 kilohertz, so you have this formula. अगर आपको बोला कि 1 kilohertz के लिए oscillator बनाना है, तो आप क्या रखेंगे, आप 1000 रख देंगे, 2 pi उधर ले जाएंगे, या 2 pi को यही रखेंगे, FO को लाएंगे और RC की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसमें कैपेसिटर की वैल्यू विल एज्यूम, लेट्स से सम 1 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड, जो भी है, जिससे कि रजिस्टर की वैल्यू सुटेबल आए, मतलब 1K के रेंज में, 10K के रेंज में, मोर देन 1K होने चाहिए। So you will be able to design this. But now the second condition remains. कौन सा? इसका loop gain should be, what is that condition? Unity. Yes, if all resistors are equal, दोनों R1 R2 और C1 C2 and capacitor are equal, C1 C2 भी equal ले लिए। अगर हम derive calculation करेंगे तो A equal to 1 upon beta
इक्वल टू 3, मतलब यहाँ लूप गेन ए बी इक्वल टू 3 मेंटेन करना पड़ेगा। सो दिस इज द कंडीशन। नाउ वी नो अगर हम ये एफ हम 3 मेंटेन करना है तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये किस तरीके से है। देखो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है, तो यहाँ से अगर कोई फीडबैक सिग्नल जा भी रहा है तो वो नॉन इन्वर्टिंग को जा रहा है, इनपुट अगर जा भी रहा है कोई तो नॉन इन्वर्टिंग को जा रहा है, तो गेन किसका रहेगा? नॉन इन्वर्टिंग, 1 प्लस RF upon R। So this is the gain. So this is what we need to adjust 3. So how should we get it? It implies RF by R1 should be equals to 2. That implies that RF should be maintained equals to 2 times R1। ये कंडीशन हो गई। ये इस तरीके से अगर तुमने डिजाइन कर दिया तो you will be able to। तो हमने दो चीज देखा, एक ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस और दूसरा ये देखा हमने RF should be equals to twice R। इस तरीके से ये दो अगर अपने पास है तो we can design the Wien bridge oscillator। I hope it is understood। Ultimately the phenomena remains the same, that there is no input as such। देखो कभी भी प्लस VCC या माइनस VE को कभी इनपुट मत बोलना। ट्रांजिस्टर में भी जब यहाँ VCC देते हैं उसको कभी इनपुट मत बोलना, उसको बायसिंग बोलो। जैसे आपने एक बार बोला कि DC टू AC ये कन्वर्ट करता है, तो वो सही अर्थ में सही नहीं है। DC ये जो बायसिंग के लिए दिया है, ऑसिलेशंस कैसे जनरेट होते हैं इन जनरल, अगर अच्छे से पढ़ोगे आप डीपली, सो दैट आर जनरेटेड थ्रू द नॉइजेस एंड ड्यू टू रीजनरेटिव एक्शन ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक इट इंक्रीजेस। नाउ व्हेन इट is increasing, we need to make it sustainable, and that is possible if we make its Bar-Coushain criteria hold good. And in order to that, there are certain conditions required. So one condition is, if I maintain this one, loop gain equals to 3, I will be able to get RF equals to 2R1. So if I adjust these register values in such a way, I can get the oscillations with this formula. Now in this journey, we have third oscillator. See, our topic here is, you can say, oscillator and waveform generator। Actually waveform मिलना स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो उसको waveform generator बोला है, ना कि उसको भी oscillator बोला है। oscillator is और waveform generator थोड़ा बहुत रिलेटेड है बट नॉट ट्रू। तो ये एक ही टॉपिक में आ रहे हैं, सभी पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वाड्रेचर ऑसिलेटर। क्वाड्रेचर का क्या मीनिंग है आपके समझ में क्या? क्वाड्रेचर मीन्स 90 डिग्री फेज शिफ्ट। क्वाड्रेचर मीन्स 90 degree phase shift. So here in the quadrature oscillator we will get sinusoidal signals which are 90 degree phase shifted। तो साइन वेव से अगर कोई दूसरी वेव 90 डिग्री फेज शिफ्ट है तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको क्या नाम है? साइनसॉइडल से 90 डिग्री फेज शिफ्ट रहने वाला कौन सा है वेवफॉर्म? साइन और कॉस में कितनी डिग्री का फेज शिफ्ट होता है? 90। बस, तो यहाँ हमको इट इज गोइंग टू गिव मी अ साइन वेव फॉर्म, तो यहाँ हम इस तरीके से बनाएंगे, ये दोनों हमको देंगे साइन और कॉस। कई बार ऐसे 90 डिग्री फेज शिफ्टेड हमको चाहिए होता है। ऑप्टम कौन सा डायग्राम बन रहा है मुझे जरा बताना। अगर कैपेसिटर फीडबैक में है तो कौन सा डायग्राम? तो ये हमको दे देगा कोसाइन वेव, अगर ये साइन है तो ये कोसाइन वेव देगा। लेट्स से दिस इज माय सम ऑफ एम A1। नाउ वी विल सी द फीडबैक। सो इफ दिस इज R1 C1, this is R2 C2, and this is R3 C3. So this will represent my feedback network, and A1 and A2 represents my amplifier, and it will give me 180 degree phase shift। So quadrature oscillator, we can say, what is it? Quadrature oscillator is nothing but it generates two signals, sine and cosine, that are 90 degree phase shift, that are in quadrature। Quadrature ka meaning that is out of phase by 90 degree। So this is what is the job of the quadrature oscillator। In certain application we need two waveforms with 90 degree phase shifted in communication or some such applications। So here dual op amp we are using, A1 and A2, and 3 RC network। This is what we are using in order to get the 360 phase shift। So here A1, now what is it? A1 पहला op amp जरा ऑब्जर्व करो क्या है, इन्वर्टिंग में कि नॉन इन्वर्टिंग में? कौन सा सर्किट है ये? इंटीग्रेटर वाला। यस यस यस, वेरी नाइस। व्हेन द कैपेसिटर इज इन फीडबैक इट इज इंटीग्रेटर। और अब आपको याद आ रहा होगा कि इंटीग्रेटर क्या करता है, आपको साइन का कॉस बनाता है, कॉस का साइन बनाता है, कितना फेज शिफ्ट देगा वो, और ये नॉन इन्वर्टिंग में। नाउ A2 को बोल दिया है जस्ट प्योर इंटीग्रेटर, एंड दिस कंट्रीब्यूट्स टू अ एम्पलीफायर स्टेज। एक एम्पलीफायर लगता है और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक वाला नेटवर्क लगता है। सो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर एम्पलीफिकेशन सो दैट वी कैन एडजस्ट द वैल्यूज टू गेट द प्रॉपर वैल्यू ऑफ लूप गेन। नाउ R3 C3, this is a voltage divider network, क्योंकि आउटपुट का some fraction we are feeding back, some output का some fraction we are feeding, just adjusting the value of R and C into a non-inverting terminal, that is a positive feedback। So in total how do it contributes? So we can say the 360 degree or 0 degree phase shift is obtained by A2 90 degree, ठीक है, क्योंकि वो इंटीग्रेटर है,
then R3C3 and in combination with amplifier A1 will adjust this to contribute to 270 degree. Thereby in total this all will contribute to 360 degree phase shift. So in this way we are trying to get the 360 degree phase shift. So we know pure A2 means pure integrator A2, it is contributing 90 degree. Just by adjusting the value of R3C3 and A1 we are able to get the another phase shift of 270 degree. So the total phase shift of 360 degree obtained at only one frequency. वो frequency हमको मालूम है कौन सी होंगी, FO called the frequency of oscillation. Directly I'll give the formula that FO equals to 1 upon 2 pi RC. RC phase shift में ये वाला formula याद रखो, where R1C1 equal to R2C2 equal to R. यानी simplify हो गया अगर ये values हमने maintain किए तो R1 equal to RC. At this frequency और वो जो हमको condition है, our loop gain should be square root of 2 और A equal to 1 upon beta 1.414 root 2 की value. So these two cases are there that you need to maintain. Okay. One is this one. These two things will be there, which is second condition for oscillation. So I hope it is clear that in this circuit, one is a non-inverting integrator, another is a simple integrator or pure integrator. So it contributes a 90 degree phase shift. So just by this A1 and RC combination will try to get another phase shift of 270 degree. Thereby total phase shift will be 360 degree. And just by at the frequency of oscillation will get F is equal to 1 upon 2 pi RC, provided we maintain R1C1 equal to R2C2 equal to R3C3, that is equal to RC. If we maintain this one and at the frequency of oscillation we know this condition, if we can achieve, there will be a sustained oscillations and we will get the free oscillations. Okay, now our actual astable monostable type of circuit will start. So that will start in the next one. Skip for the time. Start new topic in the next lecture.